The atomic number for phosphorus is 15. For manganese, it is 25. यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल को राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s1. So 1s2 2s2 and 2p6, all of these things are going to be what are going to be filled. So Ali have your mic off, please. So Yes, 1s2 sir. will be completely no sorry. I was trying to turn off the mic of Ali. I mistakenly pressed ask on you. Okay. So yeah, I was saying that when we have 1s2, this 1s2 will be completely filled and it will be paired. 2s2 will be also paired and 2p6 is also completely filled. That's why it will be paired. Now we have to see ps1. If you look at ps1 will be having one bond because it is one orbital and there will be one electron like which is unpaired. So number of unpaired electrons in sodium, it is equal to how much? Unpaired electron, it is equal to 1. For phosphorus, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3. So 1s2 is completely filled, 2s2 is completely filled, 2p6 is completely filled, 3s2 is also completely filled. You have to know look at 2p3. So if you look at 2p3, we will be having singly occupied. So that is why there are 3 unpaired electrons. So unpaired electrons will be equal to 3. So similarly, calculate for manganese. Similarly, calculate the unpaired electrons in manganese. Abir, assalamu alaikum. Am I audible, Abir? Welcome, sir. Yes, you're right. Abir, be on time, okay? 10 Yes, sir. minutes late. Yes, I was praying for Maghrib. The prayer happened at 6:30. That's why. So, do you know Surya Kausar? Yes, Abir. आपको सूर्य कौशल याद है? जी सर. आपको सूर्य कौशल याद है? इन्ना आतेना कल कौशल आपको याद है? हाँ सर. कुल अल्लाह अहद याद है? हाँ सर. अब मगरिब में यही दोनों पढ़िएगा, ठीक है? ओके सर. हाँ. He sent the answer for matrix in the chat itself. They are waiting for me. Send it in group chat. Yesterday is our last class. Sajid, Ali, sorry, Ali. Ali, which class recording? Last Thursday.
Yes, Alina, that is correct. Last class. Okay, look. Can you please ask them what happened? Why can't you ask them, Ali? Can you ask Learnivio team for the recording? प्लीज आस्क द टीम आप पहले पूछिए अगर नहीं मिले तो मुझे बताइए वी विल गेट इट I'm asking, please ask the team, they will send you the recording. Okay, Ali, can you hear Okay, me sir. now? Yes, sir. चलिए प्लीज सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद यू हैव टू आल्सो फाइंड द अनफिट इलेक्ट्रॉन्स तो बाकी लोगों को तो आना चाहिए ना मैं क्या हो गया रुपैदा आपको आता नहीं है ये रुपैदा यस Sir? रुपैदा do you know how Yes. to do this type of question No, okay I was sir. waiting for your answer no Oh, this one. हाँ बताएं So the last shell is full, no? So do you know how to write the electronic configuration like this yeah. tell me for magnesium Oh, 1s2, 1s2 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2. no 4s2 and Or then 3d5 oh, but like the last electrons come, they exchange now, sir, for the 20 from the 21st element to 30th element. तो वैसे आप लोगों को बता दिया गया था मतलब 4s मतलब 3d5 4s2 बोल दिया गया करने के लिखने के लिए Sir? I mean the teacher they have asked you to write it as 3d5 4s2 Yeah. but you know that like if I talk about the energies then 4s2 then 3d5 correct Yeah. है ना first 3 4s2 then we will 3d5 ठीक है Okay. so like all of these like which is the unfilled which is partially filled or like out of these which subshell is partially filled 3d5, the D block. 3d5 yeah, correct the D subshell is partially filled Yeah. 1 2 3 4 so how are we going to fill the electrons like this 1 2 Two. 3 4 5 Yeah. and then the pairing will happen right after that Yeah. the pairing will happen you know this also Yes, sir. so unpaired electrons is equal to how much it is equal to 5 Yeah. this total is now So that makes it stable, no, sir? sorry So it makes it makes it stable, no? half filled Yeah, partially filled. no half filled right but not partially filled half filled makes it stable partially filled आपके जो पास is it like anything like D3 is also partially filled Okay. right so half filled it is yeah that makes it stable but वो question नहीं है लेकिन ना ठीक है ना we have to focus here unpaired electrons unpaired Okay. electrons is 5 Yes. after this you are going to write magnetic moment or spin magnetic moment it also is very small concept spin
magnetic moment, which is denoted by mu, which is denoted by mu. Very basic formula. इसको याद रखिए. This is mu is equal to root of n into n plus 2. Okay, n into n plus 2. Now what is n here? N, it is equal to number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons. Okay, so I hope you can do some questions. Okay, a question. Determine the mu for following. 6C, carbon है. I'm writing the electronic configuration also. Second कर लीजिए आप 21 scandium. Third कर लीजिए आप 26 iron. You have to calculate the mu. So mu के लिए what do you need? Unpaired electron. In order to get unpaired electron, you need to write the electronic configuration. ठीक है? So you start from there. Electronic configuration. From electronic configuration, you will calculate the number of unpaired electrons. And after you get these unpaired electrons, you are going to calculate the mu. We start. I hope this is not very tough. You don't need to calculate the root. Okay, once you get the root, just keep it as root. Okay? You don't need to find the accurate value of root.
हाँ भाई साहब चाहे आपसी कैंसर है yes okay fine अभी तो going good I don't know how correct it is but उसका आंसर आ रहा है मुझे ठीक है नंबर ऑफ सेकंड का सही नहीं है आई थिंक सेकंड का सही नहीं है no सही my bad it's fine correct what about others Alina नहीं होगा हाँ अलीना टेल मी Yes, sir. हो रहा है कि नहीं हो रहा है Nice, sir. क्यों एक सेकंड माइक ऑफ कर नहीं सर बोल के माइक ऑफ कर देना बस हाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे हैं क्या कैन यू नॉन डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन टेल मी अलीना जल्दी बताइए माइक ऑन रखिए Yes, अलीना sir. कैन यू कैल माइक ऑन रखो यार हम बार बार आप लोग को बोल के इंतजार करते रहे हैं आपके जवाब का No, sir. when I am talking to any one of you please keep your mic on can you determine the number of electrons number of unpaid electrons No, sir. can you write the electronic configuration Yes, sir. once you write the electronic configuration क्या है बचा भाई बताइए कार्बन के आपने लिखा कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर माइक ऑफ कर दिया हमने बोला माइक ऑफ करने के लिए हाँ डिड यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन Yes, sir. फिर क्या है उसमें बताइए क्या है कॉन्फ़िगरेशन जल्दी बताइए जल्दी यार इतना टाइम नहीं है Sir, I'm typing. नो नीड टू टाइप इतने टाइम है मेरे पास हम माइक ऑफ करके पढ़ाने लग गए टाइप करके पढ़ाने लग गए प्लीज अंडरस्टैंड भाई टेल मी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1s square, 1s2, 2s2, 2p6. तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं भाई मेरे 2p6 कर PS2. दीजिएगा जब अरे भाई 2p6 कर दीजिएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव इन कार्बन 12. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू यू हैव इन कार्बन 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलीना अच्छे हमने ऐसी बकवास में लिखा है 6 बता के लिखे हुए हैं यहाँ पे जब आपके पास 12 कर रहे हैं बताओ भाई बताओ यार छोड़ो here we have 1s2 2s2 and 2p2 1s is completely filled 2s2 is also completely filled p has 3 subshells 1 2 and 3 now in the 3 p subshells we will be only having 2 electrons that is why the number of unpaired electrons will be equal to 2 and if I want to calculate the mu it will be equal to under root n into n plus 2 n is equal to 2 into 2 plus 2 that will be equal to how much 2 plus 2 is 4 4 to the 8 under root 8 next we have scandium in scandium we have 21 it will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 this is 20 and 3d1 so we have the number of unpaired electrons will be equal to 1 because in d we have only one electron that will be unpaired the rest of the other substance they are completely filled unpaired electrons is equal to 1 mu will be equal to under root 2 into 2 plus 1 1 plus 2 so 1 plus 2 2 1 2 plus 1 that is equal my bad 1 into 1 into 2 1 plus 2 2 plus 1 is equal to 3 3 into 1 is equal to 6 so mu will be equal to how much root 3 if I look for iron it will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 now if I calculate the number of unpaired electrons in the d let me first of all make the 5d substance here we will be having 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron. D में 6 करना है 6 electron. And the number of unpaired electrons it is equal to how much? Number of unpaired electrons is equal to 4. And I want to calculate the mu. Mu will be equal to under root 4 into 4 plus 2. So 4 plus 2 that is equal to 6. है ना? 4 into 4 plus 2. 4 plus 2 is 6. 6 plus 4 that is equal to 24. Under root 24.
रूट 48 कैसे आ रहा है? 6 कर दिया था आपने, है ना? यस अभी यू डिड नॉट डू दिस यस पार्ट ना, मैंने, ये आपने ठीक ठीक। हाँ सर 6 की जगह व्हाट हैपेंड? 4 की जगह सॉरी 6 व्हाट ले ली। अभी? हाँ ठीक है, ध्यान रखिएगा। रुफैदा आपका आंसर नहीं आ रहा, रुफैदा और रिस्पेक्टिंग की आपकी सारी चीजें आती हैं। यस हाँ रुफैदा, हाँ सर, या सर, आई गॉट द आंसर. यू गॉट द आंसर बिफोर मी और आफ्टर मी? No, the last one I got it after you. The first two I got it. But just be proactive in sending the answers, okay? Okay, sir. Ali and Sajid, Sanatan है वहाँ भाई. Ali, Ali आप last class में नहीं खेला था. That's why you were asking for the lecture. Yes. Ali. Yes. Yes, Sajid, what about you? Were you present in the last lecture? Yes, Ali, very present. Sorry, Sajid, were you present in the last lecture? Sajid. Yes, sir. So why I am not getting any answers, Sajid? बताइए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने प्रैक्टिस नहीं किया मतलब? माइक ऑन करो यार साजिद, माइक ऑन को बात कर रहे हैं ना आप आपसे. जी साजिद बताएं. किया था। किया था, फिर क्यों नहीं हो रहा है? फिर आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? आपने कैसे किया था रिवाइज? बस देख देख के या फिर सारे सवाल खुद से किए थे? व्हाट एवर क्वेश्चंस वी डिड इन द क्लास, यू शुड बी एबल टू डू दोस क्वेश्चंस आफ्टर द क्लास. ओके, जी। फिर सिर्फ भी बोल देंगे चलेगा क्या? ध्यान दीजिए साजिद, है ना? नेक्स्ट टाइम आंसर्स आने चाहिए. अब देखिए, अब जो नया हम पढ़ कराने जा रहे हैं उसमें आंसर्स आपके आने चाहिए, ठीक है? ओके। चलिए, होपफुली आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा. इज एवरीवन डन? एनीवन स्टिल राइटिंग? एनीवन स्टिल राइटिंग? एनीवन स्टिल Yes, राइटिंग? sir. ठीक है, देखिए अभी काम कर देते हैं आप लोगों के लिए आसान. इफ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज n, है ना? और म्यू क्या होता है? म्यू इट इज इक्वल टू अंडर रूट n into n plus 2. Fine. So when the number of electron it is equal to 1, the value of mu will be equal to how much? Root 3. देख लीजिए, 1 into 1 plus 3. सॉरी, 1 into 1 plus 2, 2 plus 1 3, 3 बस, है ना भाई? देख लो जरा. ठीक है, so root 3 it is approximately equal to 1.7. ओके, ठीक है. 2, अगर 2 कीजिएगा तो क्या होगा? 2 plus 2 4, 4 2 से 8, अंडर रूट 8. अरे देख रहा है नहीं? देख रहा? समझ में आ गई बात? बोलो भाई. नहीं आ रहा समझ में किसी को? हाँ ना, बोल नहीं रहा भाई. अभी आपको समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। Alina, what about you? Are you understanding? Yes, sir. ठीक है. थ्री, अरे देखो हम बता देते हैं इसमें. एक थ्री वाले एक्सप्लेन कर देते हैं. आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू. वैल्यू ऑफ म्यू क्या होता है? 3 into 3 plus 2. क्या हो जाएगा ये? रूट अंडर 3 into 3 to the, sorry, 3 plus 2 that is equal to 5. Will be equal to अंडर रूट 15, है ना? तो यही अंडर रूट 15 हम डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर में ही कैलकुलेशन करके, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल कैलकुलेशन. एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 3.8 अप्रोक्सीमेटली, है ना? 4 अगर कीजिएगा, 4 into 6 is equal to 24, root 24. This will be approximately equal to 4.8. 5. 5 7 the 35, root 35. This is approximately equal to 5.9. इसके बाद 6 into 8 48. 48 में क्या होगा आपके पास? approximately equal to 6.9. इसके बाद कर लीजिए 7. ठीक है, 7 से ज्यादा, 7 से ऊपर आपके पास आ ही नहीं सकता, बिकॉज एफ सबसेल में यू कैन हैव F7, है ना? F8 होगा तो फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी. 7 से ऊपर आ ही नहीं सकता आपके पास. तो 7 into 9 that is equal to around 63. This is approximately equal to 7.9. ठीक है, कॉपी कर लीजिए. तो आपको यहाँ पे एक चीज आपको दिखानी है. जैसे 1 है 1.7, 2 है 2.8, 3 है 3.8, 4 है 4.8, 5 है. मैक्सिमम यही केसेस आएंगे तो 5.9.
ठीक है, आपको क्या रखना है, 1 और 5 को छोड़ के 1 में कितना 0.7 1. If the number of unpaired electron is equal to 1, then the mu will be equal to 1.7. When the number of unpaired electrons is equal to 5, the mu will be equal to 5.9. So 1 में 1.7, 5 में 5.9. Rest of all of these are going to be what? All of these are going to be 0.8, 0.8, 0.8. If you have 2 unpaired electrons, the value of mu will be 2.8. If you have 3 unpaired electrons, the value of mu will be 3.8. If you have 4 unpaired electrons, the value of mu will be equal to 4.8. This does not have any reason. This is what we have observed. ये एक observation है, इसकी कोई इस तरह से याद रखिए. Does this make sense? Yes or no? Alina, Rufaida, Ali, Salif, Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चाको. आपके दोस्त की तबीयत खराब है रुपए. You know that. Yes, रुपैदा. सर. आपके दोस्त की तबीयत खराब है. हाँ सर. हम्म, और नहीं पता था मुझे. आपकी मैसेज सदिया मैसेज कि मेरी तबीयत खराब है सर, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे क्लास में. थोड़ा टाइम करें, मैसेज कर दीजिएगा उनको आप. अच्छा. सदिया है ना आपकी दोस्त. हाँ हाँ जी. और कुछ किसी बच्चे को लेकर please raise your hand once you're done. Waiting for Alina. Sir, done. Once you raise hand, na, please keep your hand raised. Okay. Electronic configuration using noble gas. ठीक है, ठीक है. What are noble gases? Group 18 elements are called noble gases. ठीक है, are called noble gases. What are the group 18 elements? We have helium. जिसका atomic number होता है 2. Then we have neon. The atomic number is 10. Give me a second. Neon. And then we have 18 organ. Then we have 46 krypton. उसके बाद होता है 54 xenon. Then we have last, that is radon, which is 86. One more noble gas is there, तो लेकिन यूज नहीं किया जाता बिल्कुल भी. ऑर्गेनिज्म होता है 180, 118 ऑर्गेनिज्म, but we don't really use it. So what is the meaning electronic configuration using noble gas? बहुत ही आसान है. For example, I have write carbon 6. So the normal way of writing that is 6 is the atomic number, so it will be 1s2, 2s2, and 2p2. Right? The 6 electrons are filled.
Instead of writing 1s2, what I can write? Helium in square bracket. Okay, helium in square bracket. And then 2s2, 2p. 2s2, 2p. For example, if you want to write sulfur, let us suppose. What is the atomic number of sulfur? 16. Hello? So how will we write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and 3p4? 6 4 are 10, and sorry, 6 plus 4, that is 10. 6, 16. Instead of this 1s2, 2s2, 2p6, what we can write? We can write how many electrons are there? Tell me. 6 plus 4, how many? 10 electrons. 10 electrons. So which noble gas should I use? Tell me, guys. Which Neon. noble gas should I use? Neon. We can write neon because neon is having 10 electrons. Neon. Then we will write PS2, 84. Similarly, for then let's suppose we have Fe3 positive. ठीक है, इसके लिए भी आप कर सकते हैं. अगर ये Fe3 positive, ये पहले नहीं कर सकते, Fe कर लीजिए. Fe atomic number is 26. Please do this, okay? आपको अगर भागते हैं तो आप ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं. Okay, most of you guys must have written. For iron basically क्या होगा आपके पास? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p5, 3p6, है ना? Now देखिए 10 तो है, 10 के आगे आप देख लीजिए 18 है. हाँ 18 we can यहाँ से यहाँ तक. So we can use this as argon 4s2, 3d6. ठीक है. So यहाँ से देखिए I hope you have written all of these things. From here, what I will tell you guys is to calculate how to calculate the number of electrons, how to calculate the atomic number from electronic configuration. आसान है. Atomic number from electronic configuration. ठीक है, ध्यान दीजिए. पहला केस देखेंगे. First of all, we will see for neutral atom. For neutral atom, pure logic है. Neutral atom में क्या है? If you have neutral atom, the number of electrons is equal to atomic number. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है ना, न्यूट्रल एटम का. आयरन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एग्जांपल आर्गन में होंगे 18
और ये 6 प्लस 2 कितने हो गए? 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 26. So 26 will be the atomic number of iron. Does that make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. बताएं, ठीक है? अब ध्यान दीजिए जरा. If we have a cation, if I have a cation, when you have a positive charge, how will you get a positive charge? When you remove the number of electrons. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको ना ऐसे चेंज कर देते हैं. Atomic number is equal to atomic number is equal to number of electron in the system. Because we are calculating atomic number. ठीक है. तो इस केस में cation केस में क्या होगा atomic number? Atomic number will be equal to number of electrons that you can calculate from the electronic contribution plus the charge. Because आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है ना वहां से. Since you have removed the electrons, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला होगा? फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम 2 पॉजिटिव. कैल्शियम 2 पॉजिटिव से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए. In order to get the atomic number of calcium, you will have to add 2 in order to get what the atomic number. ठीक है. तीसरा देखिए anion. The case of anion, atomic number will be equal to आपने anion में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला है, उसको हटाना पड़ेगा. Number of electrons, whatever you have in the electronic configuration minus the charge. If you have -3, that means you have added 3 electrons. उसको हटाइए तब तो मिलेगा आपको असल इलेक्ट्रॉन नंबर. Copy this down. Raise your hand once you're done. तो लिख लीजिएगा. Determine atomic number of following. A part X3 positive, argon 35, B Y negative, इसमें beyond 3s2 3p6 3p3. Calculate the atomic number for these. कितना चलेगा?
What happened, guys? हो जाएगा ना भाई? I have not given any examples, but I hope you can use your logic in order to get. For example, आदमी is having 18 electrons, है ना? Plus 3d5 कितने electrons हो गए? And then because it is a cation, what will you do? Number of electrons will be calculated from the electronic configuration, है ना? आना चाहिए यार आंसर. Zoom chat में please send the answers in the Zoom chat. Send it to Salim. कबीर नहीं यार 26 होगा. हाँ ठीक है माय बात. हाँ ठीक है ठीक है. रुपैदा. हाँ वेरी गुड करेक्ट. यहाँ पे कैसे करना. अलीना क्या आंसर नहीं है अलीना. अलीना Yes, sir. नहीं आ रहा आंसर. Nice. मैं कौन रखिएगा. एक बात बताइए आप यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं कर सकते. बता नहीं सकते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा. जी अलीना बताइए. हाँ अरे बोलो. अरे उस बच्चे को बताइए यहाँ पे पढ़ लीजिए आप पहले. बुलाइए उस बच्चे को हम डांटते हैं. सर वो मेरी कजिन बहुत छोटी है अभी. देखिए इधर देखिए भाई इधर देखिए. ऐसे डिस्टर्ब होता रहिएगा तो नहीं आएगा ना. कैसे आएगा. आएगा ही नहीं. फिर ऐसे डिस्टर्ब होता रहिएगा तो बार आप. देखिए भाई हम समझा दे रहे हैं जिनको समझना है उनको समझ लीजिए. आयतन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन. 3d5 में और 5 प्लस 5 कर लिया हमने. दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वी कैन गेट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिकॉज़ इट इज अ कैटायन. इसका मतलब ये है कि हमने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं. तो न्यूट्रल होता तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और होते हैं. ठीक है. इफ यू ऐड दीस यू विल गेट 26. ठीक. यहाँ पे आ जाते हैं. Here in neon we have 10 electrons plus 2 plus 5. This is the number of electron that we got from the electronic configuration. We are writing here negative sign, that means we have added 1 electron. तो न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. So we'll do -1. This will be equal to how much? 10 plus 6, that will be equal to 16 I think. Sajid, you got this? Yes or no? Please tell me Sajid. Yes, sir. साजिद आपको समझ में आ गया. ये पहले हाँ. था भाई आंसर. कुछ ऐसा टफ सवाल नहीं था. चलिए. तो इतना ही है ना. और कुछ खास यहाँ पे नहीं है. एंड अच्छा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसके बारे में रीजन लिखा देते हैं. आई थिंक आई थिंक वी हैव रिटन दिस प्रीवियसली लेकिन उसके रीजंस हमने नहीं लिखे हुए. एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जो दो आपको याद करने हैं उसी का हम लिखा देते हैं. दैट इज क्रोमियम एंड कॉपर. वी हैव डन दिस प्रीवियसली बाय द वे है ना. आई थिंक वी हैव डन दिस इन द प्रीवियस लेक्चर ओनली. ठीक है. क्रोमियम एंड कॉपर का वी हैव रिटन द एक्सेप्शंस. वी आर नाउ गोइंग टू राइट द रीजंस. ठीक है. जल्दी जल्दी लिखिए. We have chromium. That is atomic number 24. The electronic configuration for chromium it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d5. Rather than 4s2, 3d4, it is 4s1 and 3d5. Secondly, for copper, we have atomic number 29, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 4s2 होना चाहिए था, but it is again 4s1 and 3d10. ठीक है, so the reason is for both of them. ठीक है, कॉपर के लिए रीजन है, क्रोमियम के लिए रीजन क्या है? बिकॉज 3d5 after and 3d5 after in chromium है ना, in chromium and 3d10 fully filled in copper is more stable than partially filled, then partially filled 3d4 and 3d9 respectively. ठीक है, अगर आप मोर स्टेबल तक भी लिखेंगे तब भी आपका आंसर चलेगा. ठीक है, दैट्स फाइन. You copy this down, raise your hand one product. Now we will see why 3d5 and 3d10 are more stable. There are two different type of questions that can be asked. First of all, they can ask you why the electronic configuration of chromium is argon 4s1 3d5 but not argon 4s2 3d4. Right, because 3d5 after in chromium is more stable. Or they can ask the same thing regarding copper. So after because 3d10 fully filled in copper is more stable. Okay, that's it. Then partially filled 3d9 does है ना, compare 3d9 3d4. Another question that they can ask is why half filled or why fully filled is more stable. Write this down, raise your hand once you're done, and then you'll write the reason why half filled and why fully filled is more stable. तो फायदा आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Very good. सबने हाथ रेज कर लिया क्या? रुफैदा एंड साजिद वेटिंग फॉर यू. प्लीज रेज योर हैंड व्हेन यू आर डन. रुफैदा एंड साजिद. साजिद, साजिद प्लीज रेज योर हैंड क्विकली. राइट इट फास्ट. सबका हो गया? आप लिखिए half filled and fully filled substances are more stable because number one reason, more symmetrical distribution of electron. ठीक है, if I have 3d4 तो 1 2 3 4 and there will be one vacant orbital.
But if I have 3D5, then all of these are what? Completely, like सारे के सारे are half filled only, है ना? And all of these are half filled, so there is more symmetrical. Wherever you have symmetry, there will be more stability. Secondly, less electron repulsion is less in half filled and fully filled. Third, because there is less electronic repulsion, electrons are tightly held by nucleus. Fourth, larger exchange energy. Larger exchange energy. Meaning, if I have 24 rings, 1, 2, 3, 4. Okay. So what can happen? This electron can exchange in place with this electron, this electron, this electron. हाँ? But आपने एक बढ़ाया बस, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, one electron had only 3 places to go. ठीक है? यहाँ पे देखिए, पहले कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे थे? एक इलेक्ट्रॉन कितनी जगह जा सकता है? 3 places और. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 4. तो 4 into 3 that is equal to 12. ठीक है? तो 12 exchanges are possible. But जैसे ही आपने 3d5 किया, one exchange is more possible. Now one electron can move how many? 4. Okay, it can move to 4 different places. How many electrons are there? You're having 5 electrons, and 5 4s are 20. So from 12 exchanges, we are going to 20. Sir, इससे क्या हो जाएगा? 12 exchanges or 20 exchanges से और कुछ हो जाएगा. Basically, the thing is that if you have, this is very important. If you have charge in a very small area, that charge is unstable. But if you give that charge a large area to move on, that becomes stable. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल if you talk about अर्थ, अर्थ में अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे लाइट वायर्स होंगे, इलेक्ट्रिक वायर्स गिरे हुए, but you are not feeling any shock because that is stable condition. But if you touch the live wire which is having 1000 volt electricity, in that single wire, so there's a bar and a small piece of wire is having 10,000 volt of electricity, that will harm you a lot. But right now, आप सोचिए वो the same live wire, it is there must be so many live wires which has fallen down. बरसात का सीजन है, पूरी दुनिया इतनी बड़ी है भाई. There may be thousands of live wires which have fallen down on the earth. Earth is also a conductor of electricity, but we are not feeling any shock because the system is stable. Why the system is stable? Because the same 10,000 volt is distributed in a large area of Earth. Okay, so whenever a charge gets large area to be in, that will be more stable. That is why when an electron can move into 4 different places and each electron can move into 4 different places, that will bring much more stability. ठीक है, तो उसी को एक नाम दिया गया एक्सचेंज एनर्जी. तो एक्सचेंज एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है when you are having half filled or fully. Pop it is down, raise your hand or your turn. Waiting for Kabir and Sajid. Waiting for Kabir and Sajid. Waiting for Sajid. Now we are going to start and we are going to move towards the हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर से थोड़ी कुछ मतलब बेसिक फंडामेंटल बातें उनको हम लोग लिख लेते हैं. ठीक है, आप लोग से लिख डाल लीजिएगा यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. दिस इज द सेकंड पार्ट, हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर.
First of all, subatomic particles have been very clearly. What are these subatomic particles? बहुत फंडामेंटल बातें हैं, ठीक है. So I'm going to write about the particles. यहाँ पे हम लिखेंगे particles, ठीक है. And then their symbol, then their charge, then their relative mass, and their absolute mass. ठीक है. Relative mass मतलब जैसे for example है प्रोटॉन, है ना, और अगला पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन. Then we have electron. ठीक है. सिंबल की बात करें, then we will represent this proton by the symbol P positive. ठीक है. न्यूट्रॉन को n से जीरो लिख दीजिएगा बिकॉज प्रोटॉन इज व्हाट, इट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, न्यूट्रल. इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव, चार्ज +1, 0, -1. Relative mass, the mass of proton is approximately equal to the mass of neutron, and the mass of electron, it is 1 upon 1840, which is very less than that, very less mass than proton and neutron. If I talk about the actual mass, that is 1.673 into 10 to the power minus 27 kg. This is also 1.673 into 10 to the power minus 27 kg. The mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 20, it's 31, 21, minus 31 kgs. Copy this down. So you write charge on electron, it is equal to minus of 1.602. We take to the 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Okay, negative. The charge on, this is the actual charge. Charge on proton is how much? The same charge but in positive. This is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this charge is in negative, this is in positive. Raise your hand also done. तो फायदा है इसका अभी एक चीज होती है, देखिए सवाल दे रहे हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन बहुत बच्चों calculate charge by mass ratio. Charge by mass ratio क्या होता है? E upon m. ठीक है. Charge by mass ratio of electron. Charge by mass ratio of electron. Basically charge उसको लेना है, देखिए बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है. When you have the value तो बहुत ही आसान है. E by m ratio निकालना है, ठीक है. तो charge, what is the charge on electron? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb divided by
जनरली जो चार्ज बाई मास रेशियो निकाला जाता है वो आप निकाल सकते हैं कूलम्स पर ग्राम में भी, कूलम्स पर किलोग्राम में, जनरली कूलम्स पर ग्राम में निकाला जाता है. सो वी विल टेक द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ ग्राम. ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिखा था हमने? 9.1 इंटू 10⁻⁻1 माइनस 31 kg. व्हाट इज kg? kg इज 1000 ग्राम. तो k की जगह क्या लिख सकते हैं? 10⁻3 grams. Now the value will become 1.6 divided by 9.1 into 10 to the power minus 19 into 10 to the power plus 28 will be coulombs per gram. Now 1.6 upon 9.1, this will be approximately equal to 0.17. 0.17. ठीक है, into 10 to the power minus 19 plus 28 will be equal to how much? 9 coulombs per gram. ठीक है, so this is the charge by mass ratio for an electron. Copy कर लीजिएगा जरा. लाइक फ्रॉम द गिवन डेटा, जो डेटा आपको मैं लिख रहा है उसी इस तरह ये सवाल किया जा सकता है. ठीक है, दैट्स द ओनली क्वेश्चन दैट वी टेकन आंसर फ्रॉम द डेटा. बाकी सवाल तो कर सकते हो, लाइक व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सारी टॉपिक ही दीजिएगा. व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वो लिख दीजिएगा आपको. तो चार्ज बाय मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज भी कहा जाता है. तो बट ये सारे सवाल में आते नहीं है ना, डोंट वरी. Raise your hand once you're done. Waiting for Abir and Rufaida. No, just waiting for Sajid. हो गया. बहुत ही बढ़िया, तो बिल्कुल बेसिक सी बातें सब चलेंगी. ठीक है, तो डोंट वरी टू मच. टाइम आएगा तो फिर सब कुछ पढ़ाया भी जाएगा. शॉर्ट हैंड नोटेशन. शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होता है देखिए. फॉर एग्जांपल आई हैव एन एलिमेंट एक्स. ध्यान से देखते रहना, कुछ लिखना नहीं है आप लोग को. ठीक है ना. व्हाट वी हैव एन एलिमेंट, वी हैव एन एलिमेंट एक्स. अब एक्स के बारे में यू कैन हैव मल्टीपल थिंग्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल we can write the atomic number of x and that is noted by z, उसको नीचे लिखा जाता है. mass number is written here. और x पे कुछ चार्ज होगा, either it will be, it can have charge, या तो न्यूट्रल हो या तो चार्ज हो. अगर चार्ज होगा तो आपके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर कुछ नेगेटिव चार्ज होगा. राइट. नाउ व्हाट आर दीस डिफरेंट थिंग्स which come into it? What is this z? Z is known as atomic number. Atomic number. And this atomic number denotes the number of protons. And what is this A? A is the mass number. What does mass number denote? It denotes the number of neutrons plus the number of protons. ठीक है, number of neutron plus number of protons. ये क्या आपके पास? These are going to denote the charge. ठीक है. If you have positive charge, that means what? Means it is a cation. If you have a negative charge, that means it is a anion. ठीक है. And n it is equal to n. Y. Y जो होगा यहाँ पे, Y will be equal to number of electrons removed in the case of cation or added in the case of anion. Raise your hand once you're done, guys.
Waiting for Abir, Alina, and Sajid. Just waiting for Alina. हो गया क्या करें सीधा आप लोग को सवाल दे दें इस तरह करते हैं तो ठीक है सुनाते हैं आपको बता देते हैं सवाल ले लेते हैं इन न्यूट्रल एटम number of proton will be equal to number of electron और यही किसके बराबर हो जाएगा z के बराबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर के बराबर हाँ या ना बताएं does this make sense yes or no please tell me बोलो भाई Yes, sir. does this make sense इन हाँ बोलिए भाई बोलिए ठीक है ना लेकिन अगला देखिएगा प्लीज लिखिए मतलब ये ना प्लीज डोंट ट्राई इन अ cation with y positive charge ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें कितना होगा देखिए जब न्यूट्रल था तब तो z था इसमें आपने कटायन बनाया तो इलेक्ट्रॉन घटाया होगा कितना इलेक्ट्रॉन घटाया y इलेक्ट्रॉन घटाया बात समझ में आ रही है कटायन में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं और विल बी डिटरमाइन कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल एटम में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही आपके पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे देन इन ऑर्डर टू मेक अ कैटायन यू विल हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए माइनस और कितना निकाला आपने y निकाला y माइनस बात समझ आ रही है हाँ या ना बताएं इन एंड Yes, बोलो sir. भाई एनायन विथ y नेगेटिव चार्ज समझिएगा चीज को पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं जाना है ठीक है ना बात को समझिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है पहले कितना था z एनायन बनाने के लिए आपने क्या किया इलेक्ट्रॉन को डाला या निकाला बोलो in order to make an anion you will add electron or remove electron बोलो if you Electron want डाला. to make an anion what will you इलेक्ट्रॉन डाले है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या पहले तो इतना था z और आपने और इलेक्ट्रॉन डाला कितना डाला आपने डाला इलेक्ट्रॉन कितना डाला y डाला z प्लस y अगली चीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू मास नंबर जो होगा माइनस व्हाट मास नंबर माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ठीक है मास नंबर कौन बताता है ए नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन बताता है जेड ए माइनस जेड विल गिव यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कृपया copy this down raise your hand once you are done raise your hand once you're done waiting for appear please raise your hand man appear and start waiting for
Just waiting for Abir now. Abir, are you there in the class? Yes, Abir. Done, sir. I'll be writing here the symbol A, Z, number of protons, number of neutrons, number of electrons. Okay, ये सारी चीजें बताइए आप. ठीक. And दूसरी चीज ये है कि मतलब इसमें से कुछ कुछ चीजें आप ठीक है, हाँ आपको सब कुछ बताना है, हम सब सिंबल बताएंगे. ठीक है. यहाँ बेरिलियम, इसका मास नंबर है 9, एटॉमिक नंबर है 4. आपके पास है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मास नंबर है 40, एटॉमिक नंबर है 20. क्लोरीन नेगेटिव, मास नंबर है 37, एटॉमिक नंबर है 70. कार्बन, मास नंबर है 12, एटॉमिक नंबर है 6. पोटेशियम पॉजिटिव, मास नंबर है 39 और एटॉमिक नंबर है 90. ठीक है. कोई कर दे क्या आपके लिए, बताइए जरा. शुड आई डू एनी वन ऑफ यू, एनी वन फॉर यू गाइस, बताइए. सारे की तो लिख सकते हैं ना वैसे. बेरिलियम के लिए मास नंबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9. एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है जेड. जेड कितना, एटॉमिक नंबर जेड होता है, कितना दिया हुआ है 4. नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 4. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस जेड, कितना हो जाएगा 5. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देख लीजिए, न्यूट्रल है, हाँ न्यूट्रल है. इफ इट इज न्यूट्रल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड, कितना हो जाएगा 4. ऐसे ही करना है. न्यूट्रल का टाइम लेना है, देखिए कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी. बैटरी मत रहिएगा प्लीज, ये बैठते हैं.
खराब है किसी का? हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए, रुपए का हो रहा है आपसे? हाँ हो रहा है सर। हो गया ना? ये देखिए, आई एम राइटिंग द आंसर्स, आपको कंप्लीट दीजिएगा, ठीक है? सो फॉर कैल्शियम, mass number 40, atomic number 20, number of protons 20, number of neutrons it will be 40 minus 20, 20. Number of electrons will be 20 minus 2, that is equal to 80 for fluorine. Mass number 37, atomic number 17, number of protons will be equal to 17. Number of neutrons will be 37 minus 17, that is equal to how much? 20. Number of electrons will be equal to 17 plus 1, we have added 1 electron, 18. Carbon 12, 6, 6, 6, 6. Potassium 39, 19. Number of protons will be 39. Sorry, proton is 90. Number of neutrons will be 39 minus 19, that will be equal to 20. Number of electrons will be equal to, we had 19, we removed 1, we got 80. Is there any mistake in your work, Rukana? No sir. Abir, is there any सर बस प्रोटॉन्स में थोड़ा गलत हुआ था, एक्सेप्ट फॉर proton? न्यूट्रल। प्रोटॉन हाँ के सर। चक्कर में प्रोटॉन पे एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वही प्रोटॉन होता है, हाँ मैं पहले ठीक है? इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके वही प्रोटॉन में लिखी थी, उधर गलत हो गया था कैटायन और एनायन में। नहीं नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन नहीं करना है, ठीक है? प्रोटॉन पहले कर ओके लीजिए, सर। बस प्रोटॉन चेंज नहीं होता। अगर आपका एटॉमिक नंबर दिया तो प्रोटॉन चेंज नहीं होता, ठीक है? व्हाट अबाउट यू अलीना, सही हुआ या नहीं हुआ? सर थर्ड वाले का न्यूट्रॉन गलत हो गया था। थर्ड वाले का 37 minus 17, ठीक है? ज्यादा हार्ड नहीं है, हमें थोड़ा ख्याल रखिएगा, सोच समझ के जाएगा। अब ये 3 डेफिनेशन लिख लीजिएगा जरा, छोटे-छोटे डेफिनेशंस हैं। आई होप यू गाइस नो दिस थिंग्स। आइसोटोप, atoms with same atomic number but different mass number. Isobar, same mass number but different number of protons and neutrons. Then we have something known as isotones. आइसोबार और आइसोटोप की ज्यादा इस्तेमाल होता है, आइसोटोप से ज्यादा, ठीक है? आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स but different number of protons. Raise your hand once you're done.